Good morning, everyone. So today we are going to start with the next topic of the same chapter, chapter of history of ninth chapter. Now the topic is titles and gifts. So as we have read in about the Mughal courts through the chronicles, so now let's see that what is mentioned about the titles and gifts. So grand titles were adopted by the Mughal emperors at the time of coronation or after a victory over an enemy. Grand titles were adopted by the Mughal emperors means उनको बहुत सारे titles दिए जाते थे जब at the time of coronation means जब उनको राज्याभिषेक किया जाता था. That means that when the crown is kept on the head of the emperor or maybe after a victory whenever he won over any enemy, so उनको कोई ना कोई grand title जो था वो उनको assign किया जाता था. And high sounding and rhythmic, fine, they created an atmosphere of awe in the audience when announced by ushers कहते थे नक्स को जो अनाउंस करते होते हैं ना जब कोई मुगल एम्परर आता है उनके लिए काफ़ी सारे टाइटल्स पहले उनके नाम के आगे लगाए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि वो पधार रहे हैं. सो दैट वाज कॉल्ड द साउंडिंग वन एंड वेरी रिदमिक टाइप ऑफ द टाइटल्स विच वर गिवन टू देम. So the granting of titles to men of merit was an important aspect of Mughal polity. So किसी ऐसे इंसान को titles grant करना who was having some qualities was an important aspect of Mughal politics. A man ascent in the court hierarchy could be traced through the titles to be held. और man को किसी भी इंसान की किसी भी person की who was working in the court, his status was, we can say that, evaluated from the titles, how many titles he might have won. The title Asaf Khan for one of the highest minister, the title Asaf Khan for one of the highest ministers originated with Asaf, the legendary minister of the prophet King Suleiman, that is Solomon. The title Mirza Raja was accorded by Aurangzeb to his two highest ranking nobles. So ये जो titles थे आसफ का, that was also always assigned to that person who was the very highest minister in the court of the Mughal emperors. And same way only the Mirza Raja was also one of the title which was given to two highest ranking nobles like Jai Singh and Jaswant Singh. So these titles could be earned or paid for मीर खान ऑफर्ड बाय 1 लाख टू औरंगजेब फॉर द लेटर इफ. और कई बार ऐसे होता था कि दीज टाइटल्स वर अर्नड बाय देम एंड समटाइम्स दे वर बाइंग देम ऑल्सो. लाइक इट इज़ गिवन दैट कि मीर खान ऑफर्ड ₹1 लाख टू औरंगजेब फॉर द लेटर टाइटल मीन्स विच टाइटल, for title of Mirza Raza. Fine. So that is to be added to his name to make it Amir Khan. So then after that Mir से लेके then he was called then Amir Khan. The title was added to his names. So other onwards included the robe of honor that is called khilaf. ठीक है, खियाफ, a garment once worn by the emperor and imbued with its benediction. कि other awards included the robe of honor. robe of honor means honor का जो एक था that was called खियाफ, एक garment था बेटे which was worn by the emperor. Fine, once worn by the emperor, and imbued means which was a, we can say that, a feeling of honor when that was given to some other person, awarded to some other person. Fine, that was also one of the gift, and that gift was also the once this garment was worn by the emperor, then that was given to such a person who had done something great for the his territory, or maybe he did something good great for the emperor. And imbued with his benediction. Imbued means that only कि inspired, and benediction means blessings at the end of religious service. कभी भी कोई भी religious ceremony होती थी उसके बाद में at last में जब religious कोई भी blessings के टाइम पर ये award जो था वो और ये जो donation, we can say that award or title was given to that person with whom the emperor was very happy. Fine. So imbued with his benediction, one gift sarapa, that was a garment which was worn from head to foot, consisted of a tunic. Tunic means a garment between hips and knees, इतना लंबा कि जो hips और knees के बीच में garment पहना जाता है. Fine. So that type of garment, a turban. सरापा में मतलब head से लेके foot तक जो dresses थी उसमें tunic में पूरा गर्दन से लेके नीचे knees तक एक long garment. Then turban, as you know that it is tied on the head,
and sash, that is was paika. It was a jeweled ornament. It was often given as a gift by the emperor, and these all things were also given by the gift. ये सारी वो चीज़ें बेटे which was the titles and gifts which was given by the emperor to some of the unique people, those who did something great for the Mughal emperor. Then the lotus blossom set with jewels, that was called Padma Murasa, that was also given only in exceptional circumstances. कोई exceptional he did something great for the emperor, so that cases में he was awarding the lotus blossom. So courtiers never approached the emperor empty handed. कभी भी वो emperor से मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जाते थे. They offered either a small sum of money, that was called nazar, or a large amount, that was called peshkars. In diplomatic relations means political relations, gifts were regarded as a sign of honor and respects. If these gifts which were they were given, they were not giving these for just to make the emperor happy, but it was a symbol of honor and respect. Ambassadors performed the important function of negotiating treaties. You know that ambassadors of the other kingdom, they were there in the court of the emperors, and what was their duty? To just to make compromise and make treaties between these two, to make peace between them and maintain relations between them, good relations between them. रिलेशनशिप बिटवीन कंपीटिंग पॉलिटिकल पावर, जो कंपीटिंग पॉलिटिकल पावर्स होती थी मीन्स द पावरफुल किंगडम्स, उनके बीच में नेगोशिएशंस करने के लिए दिस एम्बेसडर्स वर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इन सच अ कंटेक्स्ट गिफ्ट हैड एन इंपॉर्टेंट सिम्बॉलिक रोल. और इनके बीच में ट्रीटीज करने के लिए एंड समझौता करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दिस एम्बेसडर्स वर आल्सो प्रेजेंटिंग द a big amount of, or big we can say that the good gifts, a great amount of gifts. Thomas Roe was disappointed when a ring he had presented to Asaf Khan was returned to him for the reason that, and he was very disappointed when he has presented a ring to one of the courtier, that is the noble of the emperor, that is Asaf Khan, but he returned it just giving a reason that it was not expensive, it was just merely worth of it was 400 rupees only. So that was also very disappointing for the person who presented that gift. Now let's see about the imperial household, means उनके घर का क्या घरेलू हालचाल क्या था. Now the term haram, घर के लिए वो अपने हाउस होल्ड एरिया के लिए they were using the word, that was the Persian word haram, is frequently used to refer to the domestic world of the Mughals. It originates in the present word haram, meaning a sacred place. They were saying to their household as a sacred place. The Mughal household consisted of the emperor's wives, and who was there in the household of Mughals? Emperor's wives. Then concubines होते हैं मतलब जिनके साथ उन्होंने मैरिज नहीं की होती है, बट मैरिज के बिना ही उनको उन्होंने अपने साथ रखा होता है. मे बी दे वॉन दोज लेडीज़ इन द वॉर, सो देवर, हिंदी में जब हम बोले तो उसको रखैल कहते हैं. सो कॉन्क्यूबिन्स मीन्स नॉट अ लीगल वाइफ्स, कॉन्क्यूबिन्स मतलब, ठीक है, कॉन्क्यूबाइंस. एंड देन हीज नियर एंड डिस्टेंस रिलेटिव्स, मदर, स्टेप मदर्स, फोस्टर मदर्स मीन्स दोज हु ब्रॉट हिम अप, जिसको दाई माँ भी कहते हैं. सिस्टर्स, डॉटर्स, सर्वेंट्स एंड स्लेव्स. पॉलीगमी वॉज प्रैक्टिस्ड वाइडली इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, स्पेशली अमंग द ruling groups. Both the Rajput clans as well as the Mughal marriage was a way of cementing political relations. दोनों राजपूत clans में भी और मुगल्स में भी the marriage was one of the way of making their political relationships very cordial with each other. And the gift of territory was often accompanied by the gift of a daughter in marriage. And while the marriage, not only they were gifting the daughter in the marriage, but also the territories were also gifted to maintain a good relations with the Mughals by the Rajputs, and even by the Mughals with the Rajputs, and Rajputs with the Mughals. So this ensured a continuing hierarchical relationship between ruling groups, and it was through the link of marriage and the relationship that developed as a result that ki Mughals were able to form. And just because of this marriage and a good relationship with each other, these Mughals were able to form a very vast kinship network that linked them to important groups. As you can take example of Akbar also, how Akbar married with whom he married? Jodha Akbar, Jodha Bai, and she was Rajput, and she was just a, we can say that a treaty between two kingdoms, and in which her father, Jodha's father, had also made a gifted his daughter to Akbar with a marriage link by marrying her. In the Mughal household, a distinction was maintained between wives who came from royal families. जो royal families में belong करती थी, जो उनकी legal wives थी, they were called begums, and the other wives which were won in the marriage, won in the wars, or maybe sometimes he liked someone and he brought them to the court
brought them to his palace. So they were called Aghas, who were not of a noble birth, जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, रॉयल फैमिली में जन्म नहीं हुआ था उनका. एंड द बेगम्स मैरिड आफ्टर रिसीविंग ह्यूज अमाउंट, और बेगम के साथ मैरिड करने के लिए उनको बहुत बड़ा अमाउंट कैश, जिसको डॉर भी कहते थे और मेहर भी कहते हैं, दैट वॉज रिसीव्ड at a higher status and greater attention from their husbands. And these begums were getting a greater attention because they belong to the royal family. And second thing, they have been married after giving a meher by her husband. So the concubines, जिसको अगाचा और the lesser आगा, जिनका जो कि लीगली वेडेड नहीं थे, दे ऑक्यूपाइड द लोवेस्ट पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ फीमेल्स. हायरार्की जो मतलब ये जो रैंक था फीमेल्स का इंटीमेट में, उनका रैंक इन कॉन्क्यूबिन्स का रैंक बहुत नीचे होता था, बिकॉज दे वर नॉट लीगली वेडेड वाइफ्स. सो दे ऑल रिसीव मंथली अलाउंस, मंथली खर्चा मिलता था उनको कैश में, एंड इवन सप्लीमेंटेड विद गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स भी मिला करते थे उनको अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस. द लीनियज बेस्ड फैमिली स्ट्रक्चर वॉज नॉट एंटायरली स्टैटिक, एंड दिस स्टेटस वॉज नॉट स्टैटिक. इवन आगाज एंड आगाज, वी कैन नॉट से दैट, वी कुड नॉट से दैट कि ये जो आगाज और अगाचा थी ये उस बेगम के स्टेटस तक नहीं राइज हुए. समटाइम्स द आगाज एंड अगाचास कुड राइज टू द पोजीशन ऑफ अ बेगम डिपेंडिंग ऑन हस्बैंड्स विल. ये डिपेंड करता था उनके हस्बैंड की विल पे, एंड प्रोवाइडेड दैट ही डिड नॉट ऑलरेडी हैव 4 वाइफ्स. और सेकेंड थिंग दैट कि ही इज ऑलरेडी, इफ ही हैड ऑलरेडी 4 वाइफ्स, देन ही कुड नॉट गिव स्टेटस टू दीज आगाज और अगाचास द स्टेटस ऑफ द बेगम. Apart from wives, numerous males and female slaves populated the Mughal household. इनके अलावा उनके कोर्ट में नंबर, उनके पैलेस में नंबर ऑफ हरम में उनके नंबर ऑफ फीमेल स्लेव्स एंड द मेल स्लेव्स वर देयर. द टास्क दे परफॉर्म्ड वेरी फ्रॉम मोस्ट मुंडेन टू दोस पर रिक्वायरिंग स्किल्स. और उनका काम जो था, काम जो उनको दिया गया था इन स्लेव्स को, दैट वॉज डिपेंड्स अपॉन, वी कैन से दैट मुंडेन का मतलब होता है सांसारिक, मीन्स द वर्ल्डली. जो भी हमारे स्किल्स होते हैं, जो भी काम होता है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, मुंडेन होता है वर्ल्डली वर्क, वर्ल्डली टास्क, जो दुनिया में जो हमारे काम है, हाउस होल्ड जो वर्क होते हैं, स्किल्स. देन टेक्ट एंड इंटेलिजेंस, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंगली द वर्क वॉज असाइन टू देम, एंड अकॉर्डिंग टू टैक्ट मीन्स यू नो दैट व्हेन पर्सन इज़ अ वेरी पोलाइट एंड वेरी टैक्टफुल पर्सन, एंड अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस. स्लेव इन्यूच, जिनको ख्वाजा सारा भी कहते थे. इन्यूच मीन्स अ मैन अपॉइंटेड टू सर्व special social functions. Have you seen जोधा अकबर, that serial, in you have seen that in that जो अकबर की सबसे बड़ी जो बेगम थी, उनके साथ उनका जो सर्वेंट था, दैट वॉज वी कैन से दैट द थर्ड जेंडर, जिसको हम हिजड़ा भी कहते हैं. फाइन. सो इनकी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस थी मुग़ल एम्परर्स के उसमें, जिनको कहते थे इन्यूच. ठीक है, ख्वाजा सारा भी कहते थे इनको, और आजकल के उसमें हम उनको थर्ड जेंडर भी कहते हैं, जिनको कि हिजड़ा कहा जाता है. हाँ. सो दे वर ऑल्सो मूव बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइफ ऑफ द हाउस होल्ड. उनका भी यही काम था कि जो उनकी बेगम्स हैं, हाउस होल्ड है जो मुग़ल का, उसके बीच में उनको करना काम में, इन हरम में. फाइन. सो आफ्टर नूरजहाँ, मुग़ल क्वींस एंड प्रिंसेस, नूरजहाँ के बाद मुग़ल क्वींस एंड प्रिंसेस, दे बिगेन टू कंट्रोल द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी संभालना शुरू कर दिया. अर्लियर दे वर जस्ट ओनली इन द हाउस होल्ड, बट दे स्लोली स्टार्टेड working into the political life also. So Shahjahan's daughters Jahan Ara and Roshan Ara, they played an important role, and they enjoyed an annual income, and that is why they were paid annual income also, often equal to that of the high imperial मनसबदार. और उनकी इनकम किसके इक्वल थी? जैसे मनसबदार को टेरिटरी दी जाती थी, वहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, एंड दैट वाज देयर इनकम. सेम वे में दिस जहान आरा एंड रोशन आरा वर ऑल्सो पेड in that amount, and in addition they received revenues from the port city of Surat. Jahan Ara to mansabdar ke equally income also she was getting, and even she was collecting the revenues from the port city of Surat, which was lucrative center. Lucrative means which was very profitable from the point of view of trade. So that center of the overseas trade. So control resources enabled important women of the Mughal household to commission buildings and gardens, and even they started making architectural styles and architecture, we can say that buildings and gardens. Jahan Ara, she participated in many architectural projects of Shah Jahan's new capital. That new capital was Shahjahanabad, which was founded by Shah Jahan in Delhi. Among these was an imposing double-story caravanserai. Caravanserai मतलब caravanserai का मतलब होता है which people were traveling in caravans, so they need to take a break somewhere, so they have to stop somewhere. So that place के लिए उनको shelter के लिए this double story caravanserai was built by the
जहानारा, बिल्ड बाय जहानारा विद द कोर्टयार्ड एंड गार्डन, जिसके बीच में काफ़ी सारी स्पेस थी. कोर्टयार्ड मतलब वरांडा, दोनों साइड में बिल्डिंग रूम्स, एंड इन द सेंटर इट वॉज the open courtyard, and even the garden was there, and that was made for the travelers and even for the traveling, those who were traveling in the caravans. So bazaar of Chandni Chowk, the throbbing center of Jahanabad, was also designed by Jahanara. The bazaar of Chandni Chowk, जो आजकल भी है चांदनी चौक का बाज़ार, that was throbbing means जो बहुत ज़्यादा फ्लोरिस्ट होता है, बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ शाहजहानाबाद, बहुत सेंटर में, बहुत पॉपुलर एंड बहुत ही ज़्यादा, we can say that throbbing means very popular. So bazaar of Chandni Chowk was throbbing center of Shahjahanabad, that was also designed by Jahanara. An interesting book giving us a glimpse into the domestic world of Mughals is the हुमायूं नामा. हुमायूं नामा भी एक ऐसी बुक है जिससे हमें बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक लाइफ के बारे में पता चलता है मुगल्स की. एंड दिस वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम. गुलबदन बेगम वॉज आंट ऑफ अकबर. शी वॉज डॉटर ऑफ बाबर, हुमायूं सिस्टर एंड अकबर्स आंट, जिसको बुआ जी कहते हैं. फाइन. शी कुड राइट फ्लुएंटली इन टर्किश एंड पर्शियन. शी वॉज वेरी एक्सपर्ट इन टू लैंग्वेजेस, टर्किश एंड पर्शियन. And when Akbar commissioned Abul Fazl to write a history of his reign, he requested his aunt also to record her memoirs of earlier times under Babar and Humayun for Abul Fazl's drew upon. When Abul Fazl was writing Akbarnama for Akbar, so that time Akbar requested his aunt to write down about his life of early, means his childhood. So write about that and help Abul Fazl to give information about his childhood. So what Gulbadan wrote was not eulogy of Mughal emperors. Eulogy means speech for praise. कि गुलबदन वट एवर शी हैज़ रिटन, यूलॉजी मीन्स व्हेन यू आर स्पीकिंग समथिंग इन प्रेज ऑफ समवन, सो दैट इज कॉल्ड यूलॉजी. सो वट एवर गुलबदन हैज़ रिटन, दैट वॉज नॉट अ यूलॉजी ऑफ द मुगल एम्परर्स, दैट वॉज नॉट अ स्पीच ऑफ प्रेज, रादर शी डिस्क्राइब, उसने सिर्फ प्रशंसा ही नहीं की है, उसने प्रेज ही नहीं की है उस बुक में, बट आल्सो शी डिस्क्राइब्ड इन ग्रेट डिटेल द कन्फ्लिक्ट्स, जो झगड़े होते थे, टेंशन्स होती थी इन हाउस होल्ड में बिटवीन द प्रिंसेस एंड किंग्स, जो ये दोनों मुगल्स के जो प्रिंसेस आपस में दे वर फाइटिंग फॉर द थ्रोन, एंड इवन द किंग्स एंड द इम्पॉर्टेंट मीडिएटिंग रोल एल्डरली वुमेन्स ऑफ द फैमिली प्लेड इन रिजॉल्विंग सम ऑफ द दोज कन्फ्लिक्ट्स. एंड इवन शी रिटन अबाउट द रोल ऑफ द एल्डरली वुमेन्स, मतलब जो घर की एल्डर वुमेन्स होती थी, रोल ऑफ देम टू सॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दिस प्रिंसेस एंड द किंग्स. So that's all.